So I might start the workshops again after this, Set up a school, I can set it how the other ones and stuff. maybe next year. Okay. Again, my challenge is I'm staying here. I'm living here in Qatar, so I have to travel from here. That's Oh, yes, I remember. Yes. Now I remember that you have applied because you were the only international participant. Yeah. Okay. So can we All start? right. Yes, let's start. I think people will keep on joining because they are also butterfly here and there. So, and fortunately, this is the session we have so few people. And I'm so if you would like to turn on your cameras, it will just make it more interactive. Arushi, Akash, and Anjali, if it is possible. And so, Vikram, and Shubham will also translate. By the way, Dilip. In we will talk in English. There will be mix of Hindi and English. This conversation would be in. कोई So बात नहीं. I can मैं हिंदी समझ सकता हूँ. very And I nice. can. And थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन हम करते रहेंगे हाँ, जैसे भी जरूरत हो. और अंजलि को हिंदी आती होगी. Akash, Arushi, are you comfortable with Hindi? I am. Yes, yes. Okay, Akash, कि- Arushi, Akash. If you will respond to us, we will know. Okay, both are saying yes. I So think then so. we are sorted for a power pack session. So okay, so Vikram, मैं वहां से start करूंगी. When you mentioned that you started to get very homesick at some point when you were in corporate career, and it was not bad. It was good job. You never said that you had a big problem with that, and you just started to miss home badly, Not and home, then but the but mountains and everything. the mountains. So yeah, so how like if you want to go a little more about that phase, because it's a huge transition. You said it very beautifully that I came here and I started collecting वापस. I just started rebuilding my hobby, but I'm sure कि वहाँ पे कुछ और होगा जो thought process सोच गई होगी कि मैं ये छोड़ के वापस जा रहा हूँ. तो आपने जब सोचा आप छोड़ के गए थे या जब चीजें डेवलप हुई तब आपने छोड़ा, लाइक थोड़ा और हमें उसके बारे में if you can tell. तो जैसे मैं अभी लैपटॉप के आगे बैठ के बातचीत कर रहा हूँ, तो लाइक ये मेरे लिए 4 साल कॉन्टिन्यूसली चीज हो गई थी. वो मुझे बहुत चीज परेशान कर रही थी. और जैसे अभी भी क्या है कि मैं घर के अंदर हूँ तो मेरे सामने पहाड़ दिख रहे हैं. तो जब मैं अपने ऑफिस में था तो मेरे सामने ऑफिस के लाइक विंडो थी, उसके बाहर सब चीजें दिखती थी. तो मुझे वो कभी लगा नहीं कि मैं ये सब करना चाहूंगा. और वो जो कॉर्पोरेट लाइफ थी वो कंटिन्यू, वो जो मुझे पता था कि मुझे 1 साल बाद या 6 महीने बाद भी मुझे क्या करना है, वो मुझे पहले से ही पता होता था. वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा एक बोरिंग कहूँ, वो चीज. बट हाँ, मेरे ऑफिस में ये था कि मुझे बातचीत करने के लिए हजारों लोग थे, वो मुझे बहुत मजा आता था. बट वो चीज रेगुलर होना, रोज कार्ड पंच करना और यस सर करना, नो सर करना, तो वो चीज मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगी. वो पर्सनली मेरा. And you found the courage वहाँ पे कि आप कुछ करेंगे in the field which you are interested in. हाँ, बिकॉज मुझे क्योंकि मुझे इसलिए लगा बिकॉज जब मैं कॉर्पोरेट में था तो उससे पहले मुझे लगता था कि मेरा ऑफिस बहुत सुंदर था, बहुत अच्छी जगह पे था और बहुत बड़ा भी था. और और मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं कोई जॉब भी कर सकूंगा. जब मुझे नौकरी मिली तो उस वक्त मेरे फादर की इनकम और जो मेरी सैलरी थी जब मैं लगाई था तो लगभग बराबर थी. इवन तो मेरे फादर ने 30 साल लगभग काफी समय तक काम किया. तो मुझे उस चीज से मुझे लगा कि अगर मैं ये चीज कर सकता हूँ तो लाइक मतलब कोई डर नहीं है इसके अंदर. तो जो मैं रियलिटी में करना चाह रहा हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ. तो यस, तो मुझे लगा कि शायद मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ. And उस जर्नी में उस टाइम पे like were there any supporters, people who you found support from in making those decisions? No. There were very few supporters, and most of the my colleagues, they were very वो बहुत डरते थे रिस्क लेने के लिए कि नौकरी छोड़ देंगे तो क्या करेंगे. इवन पेरेंट्स वर आल्सो वेरी fearful कि मैं अगर नौकरी छोड़ दूंगा. I was earning very well, like I was earning 1.5 lakh per month. That was very good amount, and so तो उनको काफी डर था कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो एग्जैक्टली मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा.
और मेरे आसपास भी ऐसे कोई रिस्क, मतलब रोज शाम को हम दोस्त मिलते थे, हर एक का मन होता था कि सुबह जाके रिजाइन कर देंगे, और सुबह कोई करता नहीं था रिजाइन। तो हाँ, तो मतलब सपोर्टिव तो शायद कोई नहीं था। यस। Okay. So कहाँ से I will then I'm really curious to ask then कि you just like where do you dedicate this strength to, like you are all sharing that so many people wanted to resign, रोज इतने सारे लोग सोचते थे रात को कि कल सुबह जाके resign कर देंगे, and nobody did. So what was the pulling factor for you that gave you to take that leap of faith कि okay, I'll see my life? You already shared it was that अगर I can get a job, this job, then is uh, I can do this also. And was there anything else which comes to your mind right now that मुझे gave you the सबसे confidence? मैं काफी लोगों से मिला, मतलब मैंने ट्रैवल बहुत किया ड्यूरिंग माय जॉब। मैं बहुत घूमता था, चाहे वीकेंड्स के ऊपर मैं बहुत घूमता था। और क्योंकि मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मैं अपनी गाड़ी उठाता था और आसपास जगहें जो भी मुझे लगता था कि मुझे देखनी चाहिए, मैं फिर लोगों से बहुत मिला। तो जब मैं लोगों से मिला तब मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब लोग बहुत बहुत अलग अलग चीजें कर रहे हैं। तो उस चीज ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि अगर मैं like, कुछ करने का मन है मेरा, तो मैं एक बार ट्राई तो जरूर कर सकता हूँ। तो मेरे लिए ट्रैवलिंग और लोगों से मिलना और मेडिटेशन, तो मैं कोई बहुत हर किसी को वो नहीं कहता कि हर किसी को बहुत ज्यादा वो ध्यान में ऐसा कुछ बैठना चाहिए, बट एक मुझे मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया कि मैं थोड़ा बहुत मतलब मेरे को आइडियाज बहुत सारे आते थे, तो वो आइडियाज इतने सारे आने की वजह से कुछ एक पे नहीं टिकता था मैं। तो मेडिटेशन, लोगों से मिलना और ट्रैवल, इन चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया कि मैं Hmm. ले लूं। Right. So during your job, while you were working, then also you kept exploring, traveling, and that actually I think gave you enough like learnings, tools to say, "Chalo, let's give it a shot." And then there was a confidence कि if I can get a job once, worst case scenario, something fails, I can get a job another job as well. और दूसरा ये भी था, शायद मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी कोई, मतलब अभी भी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे अपने फैमिली का Hmm. ध्यान रखना है, या ऐसे कोई कमिटमेंट नहीं है मेरी कोई भी, जैसे बहुत सब लोगों में होती है कि उनको अपनी फैमिली भी देखनी होती है, जो रियलिटी है। Hmm. तो शायद मैं लकी हूँ कि मेरे को नहीं करना पड़ रहा वो सब कुछ। Yeah. All right. So it's also function of using your privilege, right? Like privilege to I think a lot of youth has privilege, but not मैं everyone is really using it. अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैं जो भी अभी बहुत इजी है सबके लिए, बहुत इजी, और मैं कहता हूँ हर किसी को रिस्क लेना चाहिए एक बार तो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। और मुझे लगता है कि किसी का कुछ भी मन हो डेफिनेटली उसको करना चाहिए। प्रिविलेज तो मतलब जो भी आज की डेट में जो जिसके पास घर है और वो जूम पे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो प्रिविलेज है डेफिनेटली। Yeah. I think I would like to again restate that that's a very beautiful thing to consider. What you said is very beautiful. That if we have a Zoom internet connection, if we have a home to sit, then I think we already are privileged, and we should take risks. So very beautiful. Thank you. So moving on, would you like to say a little more about? You are a very self-designed learning. Like you collected animals, insects, mountains, things from mountains since childhood. तो काफी self designed learning type की journey रही है. Are there other sources of knowledge, especially during your job you learned through books, you started reading books, so you want to share more about your sources of knowledge, your sources of learning? So I did my graduation in botany. So during that time I was introduced to the lab work, मैंने पहली बार माइक्रोस्कोप वहाँ पे सीखा। and there are many other things which I have learned practically, the things which I cannot do in the field, or if I have to understand something deeply, suppose if I have to extract DNA from something, then I need equipment. So my graduation and masters, uh, they helped me a lot to actually जब हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो मुझे लगता है कि
वो चीजें जो हम कहते हैं और वो चीजें एग्जैक्टली में हम देखते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि वाह मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी एक, मेरी ग्रेजुएशन और मास्टर्स से। एंड यस, हाँ, ये मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट था। Hmm. And what were the other ways? Like, do you completely attribute all your learning to your masters? नो 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 नो। तो जो जैसे मेरे लिए था कि लाइक मैं अभी इंसेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, उनके बिहेवियर के ऊपर, और उनकी डॉक्यूमेंटेशन, और फील्ड में किस तरीके से हम चीज़ें कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, तो वो मुझे किताबों ने नहीं सिखाया। लाइक सपोज मुझे, अगर आप लाइक आजकल बहुत सारे इंसेक्ट्स अभी कम हो रहे हैं क्योंकि फ्लावर्स खत्म हो रहे हैं, और कौन सा स्पेसिफिक इंसेक्ट या कौन सी स्पेसिफिक वर्ड किस टाइम पे आएगी, तो ये अगर मैं किताबों से पढ़ता तो शायद मुझे बहुत समय लग जाता। तो Mm-hmm. ये सारी जो बेसिक चीजें हैं, लाइक अगर आप जो फील्ड पे या फिर अगर आप एक वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फील्ड का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। और मेरे लिए वो नेचुरली ही था, तो मुझे किसी किताब ने नहीं सिखाई वो सब चीजें, वो मेरे लिए बहुत। Hmm. So it's a combination. And would you say ki if like someone like you who's genuinely interested in insects or other form of animals and understanding and collecting them, what are the ways you think one can learn? Like especially youngsters, what are the various learning resources they can tap into? मुझे ये लगता है कि अगर जो भी यंगस्टर्स हैं जिनको वाइल्ड लाइफ या फिर नेचुरल वर्ल्ड को समझना है, तो उसको सबसे पहले अपने आप से सवाल करना होगा कि ये मैं कर क्यों रहा हूँ। लाइक इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, और वो लाइक बहुत अच्छा फेसबुक में पिक्चर आ रही है उनकी, या Hmm. फिर लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या ये रीजन है, या उनको जेन्युइनली नेचर समझ आता है। लाइक नॉट नेचर इन द सेंस कि डॉग कैट्स, वो नेचर नहीं है। लाइक एवरीथिंग इज जो हमारे Hmm. आसपास है, कि कोई फ्लावर खिल रहा है तो उसका पैटर्न ऐसा क्यों, अगर उसको जेन्युइनली लगता है कि वो चीज उसको अंदर से आ रही है, उसको समझ आ रही है चीजें, तो मुझे लगता है कि उसको वो चीज डेफिनेटली परस्यू करनी चाहिए। Hmm. और इसका सवाल था कि How can they learn? What are the sources to tap into to learn? Like if I'm genuinely interested. तो सबसे मुझे लगता है कि लाइक सपोज जैसे जब मैं जॉब में था, तो मैं उस दौरान भी नेशनल ज्योग्राफिक के साथ किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड था। मैं उनको मेल्स करता रहता था कि मैंने ये तस्वीर खींची है, मुझे क्या ये अच्छी है या गलत है। इवन तो उनका रिप्लाई कभी मुझे नहीं आया, बट आई कॉन्टिन्यूसली ट्राई टू रीच आउट पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग द थिंग विच आई वांट टू डू। Hmm. दैट इज द मुझे लगता है कि वो सबको करना चाहिए। लाइक सपोज इफ समवन वांट्स टू बी a wildlife photographer or wildlife videographer, or so there are like Instagram is a platform where you can directly ask questions. So that thing everyone has to do. Like in the beginning, they just reach out to people who are already in the field. Hmm. So reaching out, talking to people, not giving up, pursuing enough is one thing you're trying to say that we can keep on doing. And Yes. Vikram, would you like to share at this point about learning journeys which you also offer? Like you work with these children, Nat Geo. Would you like to talk a little bit more about kind of work, kind of learning someone can do being with you? Okay, so nice. अगर अगर किसी को लगता है कि उनको फोटोग्राफी सीखनी है, सबसे पहले लाइक नॉट ह्यूमन फोटोग्राफी, लाइक नेचर में कोई चीज अगर हो रहा है, उसको लगता है कि वो चीज उसको कैप्चर करनी है, और नेचर एग्जैक्टली में लाइक वाइल्ड में जो नेचर है, अगर उसको लगता है कि वहां तक पहुंचना है उसको, तो मैं रेगुलरली फील्ड में जाता रहता हूँ। जैसे अपनी तस्वीर दिखाई थी मैंने, तो वो जो भी मुझे लगता है कि नेचर में जाना चाहिए, दे आर मोस्ट वेलकम। वहाँ पे क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या होता है, सबसे पहली बात मैं उनको ऑफर कर सकता हूँ कि वो जो फील्ड है, वो एक सेफ इन्वायरमेंट जो फील्ड का है, चाहे वो माउंटेन्स हैं या फिर आसपास के जो भी जंगल है, वहाँ पे कोई अगर आना चाहता है तो वो चीज़ मेरे साथ कर सकता है। और अगर किसी को कलेक्शन करने का शौक है, लाइक किसी को लगता है कि वाइल्ड में जाके मुझे फ्लावर्स को समझना है,
और वहाँ पे रह के समझना, लाइक 1 दिन 2 दिन मुझे रुकना है वहाँ पे, वो सब चीज़ें देखनी है, तो वो सब चीज़ें भी मैं करवाता हूँ। थर्डली, अगर किसी को लगता है कि म्यूजियम, लाइक जो भी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स होते हैं, वहाँ पे स्पेसिमेंस जो हम देखते हैं, वो स्पेसिमेंस किस तरीके से प्रिजर्व रख सकते हैं हमेशा के लिए हम, या फिर हम कैसे इंसेक्ट्स, या फिर कैसे हम म्यूजियम में चीज़ें कैसे रखते हैं, वो सब। और अगर किसी को लगता है कि किसी को स्टोरी टेलिंग का बहुत शौक है, कि नेचर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो वो सब चीज़ें भी मैं करता हूँ, लाइक इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। आई ट्राई टू मेक वीडियोस ऑफ द थिंग्स विच आई सॉ इन द नेचर एंड आई नरेट देम, एंड आई मैं फिर वो काफ़ी लोगों तक पहुँचाता हूँ। अगर किसी को लगता है कि कोई लिखना चाहता है कुदरत के बारे में, तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि मैं ऑफर कर सकता हूँ, as an intern, as a paid intern also. And would you like to share more about possibilities of someone who is trying to engage wildlife as explore as a means of full-time work, a livelihood? like like you already mentioned, there's a storytelling aspect. So can you go deep into what are the possible things one can do in this area? And also you were also sharing with me at some point that the way people understand work in wildlife or work in this area of with animals and the work reality of the actual work is little different. So can you put more light on that thoda? तो जो सेकंड क्वेश्चन है, मैं उसको लाइक सपोज हमें लगता है कि जो भी हमने बहुत सारे लोगों के बहुत बड़े बड़े कैमरास देखे हैं, उनके पीठ पे होते हैं मैक्सिमम फोटोग्राफी में, वो देखते हैं और वो फॉरेस्ट में होते हैं, तो वो जो तस्वीरें दिखती है हमें, वो रियलिटी नहीं होती है। लाइक अगर जैसे मैं फील्ड में जाता हूँ, तो लाइक फील्ड मेरी होती है जहाँ पे कोई इंसान नहीं है, मैं हूँ, और अगर मेरे साथ कोई जा रहा है तो वो, तो वहाँ पे आपको शायद जो आप देखना चाहते हो, जो जिसके लिए आप आए हो अपना, लाइक 9,000 10,000 फीट के ऊपर, जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, और हो सकता है कि वो जिस दौरान आप वहाँ पहुँचे, वो चीज़ उस दिन हुई ना वहाँ पे, या फिर आपने बहुत अच्छा फॉरेस्ट में आपने ऑब्जर्वेशन किया, सब कुछ किया, आप घर पहुंचे, आपने जो भी तस्वीरें खींची और आप अपने लैपटॉप पे लगाया, वो तस्वीरें नहीं आपको मिली क्योंकि शायद कोई कार्ड करप्ट हो गया, और आप फॉरेस्ट जा रहे हो, बहुत सारी बारिश पड़ रही है, तो रियलिटी बहुत चैलेंजिंग है हमारे जो हमें तस्वीरें दिखती हैं ये, और बहुत मतलब मुश्किल काम है ये। अगर आपको बिहेवियर समझना है किसी एक चीज़ का, तो आपको रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली स्टडी करना पड़ेगा, तो ये बहुत काम है। और जो आपका पहला क्वेश्चन था कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट, है ना, तो मुझे भी रिसेंटली पिछले 3 साल से ही अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता लगा है। तो मेरे लिए नेशनल ज्योग्राफिक जो है, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको मुझे लगता है कि हर एक को परस्यू करना चाहिए, एक बार नेशनल ज्योग्राफिक को अप्रोच करना चाहिए। तो नेशनल ज्योग्राफिक, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? ओके, नाइस। सो ये इनका पेज है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी का। सो अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इनके ग्रांट्स वाले पेज पे जाओगे, तो यहाँ पे ये व्हाट वी फंड का इनका एक लिंक आता है। सो मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि मैं इस पूरे प्रोसेस को समझ चुका हूँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत इजी है, बस आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, दैट्स इट। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है, लाइक इफ यू हैव जीरो एक्सपीरियंस एंड बट यू वांट टू एक्सप्लोर द थिंग्स, दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न एंड वेयर यू कैन यू कैन स्टार्ट। सो इसके अंदर जैसे ये जो सब चीज़ें हैं स्टार्टिंग से लिख रहा हूँ मैं, तो जो कोई अगर एजुकेटर है, लाइक सपोज कोई बच्चों को पढ़ा रहा है और उसको लगता है कि ड्यूरिंग कोविड उसका जो काम है वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ है, लाइक इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म ऑफ पैसे के मामले में भी, तो ये नेट जियो उसके लिए भी फंड्स देता है। अगर आप इसको पढ़ोगे, शायद ये 10 से 15,000 डॉलर्स हैं फॉर अ ईयर, जो 8 या 9 लाख बन जाते हैं। तो और इस प्रायर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है, इवन दो यू कैन अप्लाई। और ये जो थोड़ी है, ये थोड़े जो लोग काफ़ी ज़्यादा फील्ड में पहले से हैं, ये उनके लिए ग्रांट्स हैं। ग्रेट। सो ये ग्रांट है अर्ली करियर ग्रांट। सो जो भी इंसान, किसी को लगता है कि उनको लाइक शायद उनका नाम था
फर्स्ट या सेकंड में कौन थे स्पीकर? नम्रता, गौरव गुर्जर। जो गौरव काम कर रहा है, लाइक उसको लगता है कि जो भी वो फॉरेस्ट डेजर्ट पे जो थोड़ा चाह रहा है कि कुछ फॉरेस्ट हो, ये सब चीजें हो, तो अगर उसको कुछ थॉट है और उसने कुछ ट्राई भी किया है पहले से या नहीं भी किया है, तो वो ऐसे लोग जो भी जिनको लगता है कि वो उनके पास आइडिया है बट दे डोंट नो फ्रॉम वेयर दे कैन गेट द ग्रांट्स, सो वो लोग यहाँ पे जाके उनको उनका क्वेश्चनियर है, कुछ क्वेश्चंस हैं, उस पर अप्लाई कर सकते हैं और दे पे अराउंड $10,000 और वो इंडिविजुअल को देते हैं। अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, लाइक सपोज मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लाइक मैं कोई एनजीओ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट, तो वो आपको 10,000 से लेके $1,00,000 तक देते हैं। तो नेटजियो एक बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑलराइट, मैं यहाँ पे लिंक ठीक है। Yes, absolutely. So, Natgeo is one of the places. Okay, if there are anything else which you would like to share, we can take another minute for that. Else we can move to next question. बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं जिनका नाम शायद मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर लेंगे, आप बस स्कोप पे बात कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग देते हैं 1 साल की, जहाँ पे आप जाके एज अ नेचुरलिस्ट अप्लाई कर सकते हो उनको, तो वो आपको साल के एंड में वहाँ पे ही जॉब आराम से दे सकते हैं अगर आप एज अ All right. So, actually, audience questions also we can open in some time. But uske pehle I also wanted to ask. So this is something you do full time, right? And this is your also source of your livelihood. So how did you what would you advise someone who wants to again step into this, like what kind of life they could expect? What kind of a money situation it is? Yeah. So when I quit my job, the first thing I did, I saved my money. Like I have 5 to 10 lakh in my account before I quit my job, because मुझे लगता था कि शायद कहीं ना कहीं पैसा काम आ जाएगा. सो मैक्सिमम मेरा मन था कि मैं पैसे सेव करूं, बट मैंने एंजॉय बहुत सब कुछ चीजें करी, बट मैंने सेविंग भी करी. सो अगर किसी को लगता है कि उसको कुछ स्टार्ट करना है, लाइक कुछ भी, तो मैं हर किसी को रेकमेंड यही करता हूँ कि मनी, अगर आपको मतलब बहुत सारे लोगों के थॉट्स होते हैं कि मनी मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूँ, वो रियलिटी नहीं होती है. लाइक सपोज मुझको जो भी अभी पैसा मिल रहा है, मुझे अगर कोई इक्विपमेंट खरीदना हो, लाइक सपोज मुझे कुछ कैमरा खरीदना हो, तो कैमरा 2 लाख से कम का नहीं आता है, तो मैं ऐसी कोई सर्विस नहीं दे सकता हूँ जो उस 2 लाख को एक्सचेंज कर दे एज अ बार्टर, जो हम नॉर्मली कहते हैं कि मैं कुछ भी करूँ. तो वो रियलिटी नहीं है. दैट्स नॉट अ रियलिटी until और अनलेस कोई आपको दान दे दे, बट दैट्स नॉट अ रियलिटी. आपको पैसा चाहिए होगा इन फ्यूचर डेफिनेटली. और लाइक मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो पैसा है अभी, तो मुझे ग्रांट से आ रहा है, जो मैं अपने ऊपर नहीं खर्च सकता, बट बिकॉज मेरे पे कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है, तो मेरे को जो पैसा आता है, जो मुझे इक्विपमेंट्स खरीदने होते हैं, मैं उस पर खर्च सकता हूँ. सबसे पहली चीज, अगर सेविंग कर सकते हो पैसों का, तो डेफिनेटली सेविंग करो. और जब आप रिस्क ले रहे हो, तो अगर कहीं वॉलंटरली आप कहीं काम भी कर रहे हो, तो देन इवन दो यू डोंट लाइक मनी, जस्ट टेल देम give me minimum 5, 6 or 3,000, 2,000 rupees a month, because that will going to help you in future. Try to save as much money as possible, and if you are doing something, try to ask like minimum amount, so that in future that money can help. I am hearing this message is also that you can choose where you want to work, do projects which interest you, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, पर आप ओपनली उनसे कह सकते हैं कि अगर आपकी कैपेसिटी है, तो इट वुड बी नाइस इफ यू कैन मेक सम फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आल्सो. जितना सा भी, जो भी आप अपने दिल से दे सकते हैं, बट एक अच्छा है कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन आता रहे. एंड नाउ so you have been doing this for some time now, right? So now do you still feel that saving is very important, or now you feel that yes, there's like also I remember our call when you were saying the scope is huge,
Like the amount of things you can do is huge. And I think if I remember correctly, you mentioned that money is also huge, but it's like you have to be naturally inclined to do the work. So would you like to talk more about that a little? So, if I apply a grant to National Geography, they know who I am personally, and they also know my work. So the thing is, if you are passionate, money will definitely come, because if you are passionate for something and that is unique, even if that is not unique, but if you are passionate, so there are huge amount of people who are looking for these kind of things, because मैं जो भी काम कर रहा हूँ मुझे उसमें मजा आता है, और मैं उसमें कुछ भी धोखे वाला नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। तो कहीं धोखा अगर नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक ऑथेंटिक वर्क की जरूरत होती है देखने में भी। सो फाइनेंशियली आपको धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप अपने काम के लिए प्योर हो, तो there is like huge amount of opportunities even in India also. Okay. So I think this is few set of questions I had, and I will like to take one audience question which came in from Akash, who asked, is Akash here? Yeah. Akash, would you like to ask your question yourself on the camera? That would be really nice. Somehow start to explore Akash, are you here? His mic is not working, so I think we can ask the question. Okay. So Akash is asking, how do you conduct workshops? Like when somehow start to yeah. I saw the question, right? So how do you conduct a workshop? Like when you somehow start to explore different insects and species, how that thing is identified. So is Akash wants to know how I identify that insect species, or okay. So there are 3 or 4 questions in a question, right? So how do I conduct a workshop? Like I post on Facebook, और मैं लिखता हूँ उस वर्कशॉप के बारे में कि मैं वर्कशॉप में क्या क्या करूँगा, और अपने दोस्तों को भेजता था, और वो आगे फर्दर और लोगों को भेजते हैं, स्कूल्स को कांटेक्ट करता हूँ मैं। तो इस तरीके से मैं अपनी वर्कशॉप कंडक्ट करवा पाता हूँ। लाइक इससे शुरू करता हूँ, और देन लोगों को पालमपुर में वो खुद आते हैं। देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड संभावना, वो वहाँ पे रुकते हैं, दे स्टे देयर, एंड तो मैंने पैटर्न बनाया हुआ है एक कि वर्कशॉप में क्या क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू इन द वर्कशॉप। सो देयर इज अ होल कंटेंट दैट आई डिलीवर टू देम, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर हैंड्स ऑन। सो मुझे वहाँ पे बस बोलना नहीं होता है, थोड़ी चीज़ें बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम वी आर इन द फील्ड। सो दिस इज हाउ आई डू वर्क इन द फील्ड। हाउ डू like if you are interested to know how I identify the species, so there is an app called iNaturalist. iNaturalist. So it's an app developed by National Geographic. So I use this application I use this mobile app to identify the things which I found in the nature. So this app will tell me about the species. Something which I missed. Okay. So, all right. So, Vikram, is it like also place dependent? Like this thing of where can I work? How can, like, is there a way I can start doing this in my own surroundings, or it is something which it's location specific. In some areas it's better, and not scope for other areas. And 1.5 months in Rajasthan in a desert, and वहाँ पे मैंने इतना कुछ देखा. Like Himachal is totally green, biodiverse, rich, and if I compare it with Rajasthan, a desert, so the place doesn't matter because biodiversity is all around us. Even in the Mumbai, even in the cities, biodiversity is there. Yes, so place doesn't matter. Okay. And
how can someone who wants to start small can do it? Like, how can someone begin? Imagine a 15-year-old. How can someone start doing this? 15-year-old. So first of all, I think a 15-year-old can start. That's a You very said there is grant, but they don't care for that. I just want to start understanding, like you started your journey. So what would you advise them? One small step to enter this, taste it, and then make a choice. Because you said very one important thing, that lot of things we live in these times when we get attracted by what we see on the screen, but then we start ki, chalo, I want to do this career, but then I realize, oh my god. So how can someone do those small experiments to understand ki, is it my real interest? like suppose if अगर किसी को लगता है कि वो insects पे बहुत interested है, तो अगर कोई लोग insects पे काम कर रहे हैं, उनके साथ एज अ इंटर्न की तरह डेफिनेटली काम करना शुरू करें, किसी को लगता है कि बर्ड्स के बारे में समझना है, बिकॉज लॉट दीज डेज people accept requests. Like suppose I have trained around 5 to 10 people who loves to do things around insects, so they reach me, and they came to Palampur, and I teach them how to explore things in the nature. So do contact people who are already in the field, even if you are small. Like even if a 15-year kid want to start something, or if he or she is interested, then uh, she They're should into. contact the experts as an intern. Yeah. All right. All right. So Anjali has a question and Arushi has a question. So I'll ask Arushi's first. Arushi is saying, do you work by yourself or do you have a team? And if yes, how did you find those people? So I don't have a team right now because I don't have a team. I work alone, and but the thing is, there are like around 20 to 25 kids who are in my village. They are very much interested in the thing which I'm doing. So I take them wherever I go, even if I'm going to a hike, or if I'm going to a trek. So I ask them, because their parents also likes what I do, and because kids are also like these kind of things, so they come along with me. They take pictures, but for the like scientific thing, I depend on the scientists who are already doing the thing. So I contact them through emails. But for my museum thing and all my photography videography thing, I do it alone. Yes. All right. All right. Anjali, you want to ask your question? Yeah, hi Vikram. So I'm Anjali from Bangalore. I've been collecting insects, feathers, and wings since school days. So I have a whole collection of insects with me and remnants as well. But the thing is, I've always been curious on how to preserve them. So I collect the dead insects, obviously, and I pin them. But I'm kind of struggling on how to preserve them because I the whole process of preserving, जब मैंने online में search किया था, I found it a bit expensive and confusing. So if you could just touch upon, how to preserve that and Thank you for the beautiful question, and because this is the most common question I get. So do you see this thing, yes, naphthalene? yes. So I मैं maximum अपने जो भी specimens मुझे मिलते हैं, मैं उनको like, अगर मुझे जैसे मेरे पास एक moth है, ये अगर आप देख पाओ, ठीक Mm-hmm. है, ये do you have boxes like this? So I created my own box out of shoe box और फिर मैं उस पे एक plastic sheet डाल देती हूँ and I keep thermocol under it and then pin insects and Because then cover it. the thing is, most of the people, they say the plastic not has to be used. So but the thing is, this is the only thing which can prevent from moisture. Okay. So I most of the things in my collection are dead. They're already dead. So what I Mm-hmm. do, because this is a winter season, so यहाँ पे धूप बहुत अच्छी होती है. Like it's literally very hot in the afternoon. So I keep my specimens out in the sun. It will remove all the moisture, and then I put these naphthalene balls in those specimens, so it will keep them for longer period. Only the thing is, when there is monsoons,
the problem comes in the month of monsoons only. Hmm. Keep all your insect specimens uh, in outside. Yeah. Okay. And I also had another question, if that's okay, if I follow it up with this. So, since I've been collecting insects for a long time now, I wanted to know what are the opportunities like for me to go ahead with. Because I don't know in depth of the insects that I'm collecting or how to. I don't have that in-depth knowledge about it or skills or how to identify them. I'm just interested in collecting it, and that's what I've been focusing on. मतलब इतने साल से मैं सब collect करती जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. Wings and feathers and everything, every possible thing. I have a whole mini museum in my house of it. So so if I'm approaching someone, do you think that I need to have that knowledge of whatever I'm doing, or do you think that एकदम blank slate, मतलब blank mindedly I can go and approach people and tell them कि I've been doing this? So, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, आपको जो साइंटिस्ट्स हैं, लाइक द पीपल हु आर ऑल, स्पेशली द इंडियन साइंटिस्ट्स who are like who are working with organizations, don't approach them first of okay, all, because what I have experienced, they are scientists, but they are employees, so they definitely not going to understand your passion about insects. So my recommendation is, try to reach people who are going on expeditions. okay, Like suppose there are many platforms nowadays where people put things like they are going on expedition, or like so recently there is an expedition organized by National Geography to सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? Mount Himalaya, Everest. Mount Everest, yes. So they started expedition to Mount Everest. So people applied. So they have choose those people who have like zero experience in like they don't have degrees. So you can apply on these kind of things, and there are a lot many opportunities. Try to apply to like Natural History Museum London, Kew Garden London. There are like huge museums who organize expeditions. Hmm. Yes. I don't have to worry about not knowing enough about it. I can just go ahead and tell them कि ये देखो ये है मेरा passion and I just want to do it. This is moth. I don't know what his मतलब इसका नाम क्या, I don't know. So just Okay. do it. Okay. Because name is the last thing. So I think this is a very beautiful conversation you started, Anjali, and this is all. So I think this also brings me to one question which was sticking in my head again and again. Is one what is a degree dependence? Like, would you can you say that I can completely self-designed way learn my things? Like you already mentioned, you go and work with people, you intern with people, organize expeditions. There's so many organizations which are giving grants. So how like I just want to hear from you rather than me assuming that are you saying that we are not that, like at least to a certain extent, or to where till where is the degree become limiting and where it is not, like where how much can I self learn and how can I learn? So uh, degree is important when you want to um, go through a process. Like if I want to have a PhD, like PhD is a degree which you will get only through a process. So for that you definitely need degrees, but there are like very good universities like Cambridge, Oxford, Yale. Um, they are like they prefer uh, to have a degree, but they don't concentrate on the marks you have achieved during your degree thing, right? But the minimum requirement is MSc or master's degree. So if you want to study further, or if you want to do research, only then degree thing is required. But if you are applying to a very good universities, they don't go for your marks, they still look for your passion.
Yes. And if I don't want to do PhD, I want to do what you are doing. So you can apply for independent research grants. So there are like huge amount of grants which people can get as an independent, as an individual also. Hmm. And I can do my self learning, doing internships all my childhood, But and from the books, yes, like you said. uh, nowadays collaboration is very, very, very very बहुत आम word है collaboration. So do collaborate, do ask people, I want to learn, I have these skills. If you need those skills, do write. I suggest, even if you apply 10 mails, you won't get a reply. अब डरना नहीं, 10 मेल्स और लिखो. एंड आई रियली, मुझे लगता है कि जरूर एक बार, लाइक जो भी आपको लगता है कि जो आपको इंटरेस्ट वाला इंसान दिखता है, उसको बेधड़क ईमेल करो. मैंने एक ईमेल भेजी है उसको भी. ये अमेजोन का जो सबसे टॉप का जो अब इंसान है, अमेजोन. Jeff Bezos. हाँ, तो मैंने उसको भी मेल किया हुआ है कि उसको कहीं ना कहीं बचपन में इंसेक्ट्स, पॉकीमॉन जिसने बनाया है, पॉकीमॉन जो कैरेक्टर बनाया है, वो जिसकी वो कंपनी है, उसको बचपन में बहुत इंसेक्ट्स पसंद थे. तो मैंने एक टाइम पे उसको भी ईमेल किया, उसमें रिप्लाई नहीं आया, बट आई ईमेल्ड हिम आल्सो. तो जो भी लगता है आप ईमेल करो, जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी का पैशन था कभी. और मैं इंटरनेट पे बहुत कुछ पढ़ता हूँ लोगों के बारे में कि इंसेक्ट्स को पसंद करने वाले लोग कौन कौन है. तो मैं जो भी मुझे दिखता है, मैं हर किसी को ईमेल करता हूँ. Wow. So you're making a community of insect lovers. And so I think that's very beautiful. Uh, uh, yeah, and I think one thing, yes, Dilip wants to ask something, and we will have time for that, Dilip. Only thing I wanted to emphasize, like we said, like a message I heard was that, trying is basically the key. Believing, taking risk is something he's saying again and again. Keep trying, be shameless in reaching out to people if you're genuine interest in that, and then it works. Yeah, वो and करेक्ट. yeah. So, Dilip asks, Dilip, before we take Dilip's question, it's up to you. We have also have a question in a chat, which maybe you can answer later. I just want to put it across, which is from Akash, who is, I think, one of the most youngest member also of the Livelihood Mela, the participant. He's asking any book recommendations on Indian geographical nature, insects, and ecology. So that is an information we're happy to share with all our participants later also. And if you want to have quick मैं 1 इस minute. थोड़ी देर में आंसर जरूर करता हूँ इस क्वेश्चन को. यस दिलीप. Vikram, you said you worked for the corporate for 4 years. Then you moved back to your hometown, Palampur. So, and along with you, of course, your couple of friends also wanted to resign. And but what made them stay? I mean, what made you to take the decision of quitting your job and come back to Palampur? And I would like to know the transition trouble you went initially, because 4 years you had a gap, and then again when you come back to and you get did you had any transition troubles, difficulties? So that's what does. So what pushed me to quit my job is like, I literally enjoyed my work. I made many friends. I earned good money. So but that phase is repetitive. So I quit just because I didn't get anything exciting from that job. So that made me to quit the job. And the easiest thing is to quit job. The hard thing comes after that. So quitting job is very easy. So people think that, oh, I'm going to quit my job, that's the hardest part. No, that's the very easiest part. So when I quit my job, the transition phase was earlier it was very smoothing because I don't have to wake up early in the morning, I don't have to reply to my mails. But after certain amount of time, uh, that was confusing, yes. But you just keep remember the thing that uh, these kind of phases will definitely going to come if you are looking for something new. So the after quitting my job, my parents knows that now he's not going back to the job or any corporate sector. So
that thing makes something easy, but problems, or I don't call them problems, these are challenges. They will definitely come. Even nowadays, even after uh, I've reached to this phase, still I'm getting many challenges. So I think so. Just try, quit the job if you don't like it, and then um, don't worry. First of all, I said don't worry, because even the most popular human beings, they are no more on this earth. So And call Vikram also the day you quit your job. Like he Sure. already advised, reach out. So let's use his advice. but So I think during the time, if you have liabilities, if you have like responsibilities, so don't quit your job. Just let tell other people who are who depends on you to, like, just explain them why are you not interested in your work, or you why do you want to shift. Make them comfortable. Don't hurry. very Thank you. sane advice. I think very beautiful. I think let's we are reaching at 6:50 mark and we have a closing at 7. So I would invite you to ask Akash's question. Oh, Yes, yes. Akash is old now, fed up with human made systems and now looking forward to center my efforts on environment. Sorry, Akash, I think I confused you with the wrong Akash or the right one, whatever. But yeah, are there any books which you would like to recommend? And on that, we can have a closing note. Akash, I you know मैंने हिंदुस्तान के लिखे हुए ऑथर्स की किताब कभी नहीं पढ़ी. That's because there is a reason. Because the way other explorers who wrote good books, they are not from India. What I have learned so far. And मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदुस्तान के लिखे हुए लोगों की किताबें ना पढ़ें, डेफिनेटली पढ़ें. बट अगर फिर भी आपको कोई स्पेसिफिकली आपको लगता है कि आपको इंडियन कंटेक्स्ट की कोई किताब चाहिए है, तो मैंने कभी नहीं पढ़ी तो मैं बता नहीं सकता. आई एम सॉरी. बट मुझे एक इंसान का नाम नहीं आ रहा अभी यार. एक मैं अपनी किताब लेके आऊँ, अगर दो सेकंड है 2 सेकंड है ना, एक. तो ये किताब है द एमेच्योर नेचुरलिस्ट बाय जेरार्ड ड्यूरेल. अगर आप ये किताब बहुत खूबसूरत है, और मैक्सिमम चीजें आप हमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान कुछ अलग देश है, वहां पे बहुत सब चीजें ऐसी मिलती है जो सब इंडिया में है. नहीं, बहुत सब चीजें ऐसी भी हैं जो हर कहीं मिलती हैं और वो इंडिया में भी मिलती हैं. तो लोगों ने उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है. So, Akash, I'll write it down. I recommend you to read basic books. Don't go for like very expert books. Go for basics, and try to choose like बहुत अच्छी किताबें पढ़ना, जहाँ पे बहुत सिंपल चीजें लिखी हो, क्योंकि आजकल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सारी है. So try to read simple things first. Yeah. So I'll write down the name of this book by Gerard Durrell. And do watch David Attenborough's all the movies. They are very fantastic, और बहुत inspiring है वो सारी. And okay. Okay. So any more question? किसी को लगता है कुछ और? I would invite everyone who has more questions. I'm sorry, Vikram, to Ask. please share with us, and we will try to take them to Vikram. Vikram, also, if that is comfortable, you can share an email address where people can reach out to you if they want to connect, because that has been requested. And and even after the mela, for everyone who's here and genuinely interested,
We will try to collate little more about Vikram's work website and send you. And we would really love if one of you become naturalist out of there. So yeah. और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, जस्ट गो फॉर इट। मतलब आपको किसी से शर्माना नहीं है कि वाह वो आगे निकल गया मैं पीछे रह गया, ये कभी मत करना। और सच में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इवन इंडिया में भी। मैं तो ये भी सबको बोलता हूँ कि लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज सभी के सभी लोग हमेशा के लिए यंग नहीं रहते। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी खत्म, मतलब लाइक उनकी जिंदगी नहीं रही है, बट वो जो काम कर चुके हैं वो अभी भी चल रहा है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ये मैंने अपना नेटजियो का भी काम जो मैं करता हूँ वो भी मैंने इस पे डिस्प्ले किया है, अगर आप किसी को लगता है कि वो देखना चाहता है वो भी, है ना। ठीक है। Thank you everyone. Thank you Vikram. Vikram, we would love and everyone here as well to join us in the closing ritual. If time is allowing you, Vikram, you're most welcome. We have a harvest ritual. We have Paul Cronenberg from Kanthari talking and as a special speaker for closing a livelihood overall. And we have a very special rap battle today by Dharavi Kids, the Dharavi Dream Project Kids. So all of you are welcome in the main Ecoversity room at 7 p.m. sharp. Yeah. Can you share the link? I'm gonna share the link of the live OSG board, Vikram, and for everyone else also. So But I've also shared the link for the shared, session. yeah, then sorted. So Shubham has actually shared this link. You can join using this link at 7. Yeah. Thank you everyone. Thank you, Vikram. Thank you. Do reach me if you need any help. Guys, also Sure. I think we are such a small and intimate group. If Anjali would like to turn on your camera, I would love to take a picture. This is such a close sharing. I really loved it, and I love the passion which you all brought in for this particular topic, right? Thank you. Just 1, 2, 3. Thank you. Thank you. Thank you. See you guys.